Hello students, it's grade 4, block 1, your science textbook. The lesson name is Life Cycle of Animals. क्या आपने जानवरों को देखा है? उन्हें कैसे बच्चे होते हैं, वो बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं? तो आज हम इस लेसन में यही जानेंगे. Your science textbook, I am reading on page number 10. Life cycle of animals. So please pay your attention on the line. Animals have a life cycle. For life to go on, living things must produce their own kind. This is why all living things reproduce. हर living thing reproduce करता है. Animals reproduce in two ways. Some animals give birth to young ones or babies. For example, humans, dogs, cows, elephants and kangaroos. See figure number first. Dogs and in this figure, dog and cow. These animals give birth to young ones. Others lay eggs. Later, the eggs hatch and babies come out of them. For example, frogs, hens, ants and butterflies. See figure number 2. Hen and butterfly. These animals lay eggs. The young ones of animals grow and become adults. All animals go through these different stages of development in their lifetime. Together, these stages make the life cycle of the animal. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स लेकर के रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हेन है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटोज, एंट्स. इस तरीके से एनिमल्स दो टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं. और उनकी किस तरह से डेवलपमेंट होती है ये हम जानेंगे इन आवर नेक्स्ट पेज. सो आई एम रीडिंग ऑन पेज नंबर 11. Life cycle of insects. Life cycle of insects such as butterfly, ant, fly, mosquito and honeybee have 4 stages: egg, larva, pupa and adult. Let's read about the life cycle of a butterfly. See in the figure number 3. See in this figure, the life cycle of butterfly is given. First stage is eggs, then second stage is caterpillar. The eggs changes into caterpillar and the caterpillar covers the protection. This stage is called pupa, and then from that pupa a beautiful butterfly comes out, that is adult butterfly. It's stage 4. This figure shows the life cycle of the butterfly. First, egg. The life cycle of a butterfly begins as an egg. Butterfly eggs are found in groups on leaves. Butterfly के eggs हमें leaves पर मिलते हैं, झाड़ों के पत्तों पर मिलते हैं. Then larva. Eggs hatch and worm-like caterpillars come out. This is the larval stage. अब eggs hatch होने के बाद उसमें से caterpillar बाहर आते हैं और इसी स्टेज को लार्वल स्टेज कहते हैं. Caterpillars eat leaves and grow very fast. Then pupa. When a caterpillar is fully grown, it forms a protective covering around it called cocoon. This stage is called pupa. A cocoon is usually attached to the lower side of a leaf. Unlike caterpillar, pupa is an inactive stage. अब कैटरपिलर एक उनके अराउंड में कवर तैयार करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिसे ककून कहते हैं, और इस स्टेज को पुपा कहते हैं. अब पुपा ये इनएक्टिव स्टेज है. देन अडल्ट. आफ्टर सम टाइम अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ द ककून. अब थोड़े समय बाद उसमें से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई निकलता है. इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट, the young ones in different stages
look different from the parent. This is called as metamorphosis.